Hey guys, welcome back to my channel. आज की वीडियो है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग. This is going to be based on a beautiful fairy tale, Beauty and the Beast. And without any further delay, let's just get into the video. First thing मैं अपनी स्किन को प्रेप कर रही हूँ with some aloe vera gel. I am using Wish Care aloe vera gel here. Apply it all over face and neck. Next मैं यूज़ कर रही हूँ SQ का प्राइमर and I'm going to fill in all my pores. फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरेल पेरिस का ट्रू मैच फाउंडेशन इन शेड ऑफ वनीला रोज. दिस इज़ अ मीडियम कवरेज फाउंडेशन. By the way, if you want, you can just apply it on the half of your face. The other half is going to be the B side. So anyways, we are going to paint that side. Take some and apply it on your shoulders and neck as well. नेक्स्ट मैं अपने आईब्राउज को फिल कर रही हूँ. आई एम टेकिंग अ डार्क ब्राउन शेड. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर स्विस ब्यूटी का विंकी पैलेट एंड मैं ये पिंक शेड यूज़ कर रही हूँ एज अ ट्रांजिशनिंग शेड एंड आई विल ऑल्सो यूज़ दिस लाइट पर्पल and dark purple for inner corners and outer corners of the eyes. By the way, मैं अपना eye makeup off the camera finish करने वाली हूँ to save some time. Next, I am using here Fit Me concealer by Maybelline in shade number 10, and I'm just going to conceal only one side of my face. Next, मैं यहाँ पे अपना face contour कर रही हूँ with some NY contour stick. Again, doing it on the one side only. And blending everything again. Next मैं इस look को finish कर रही हूँ with some blush and highlighter. I'm going to start the B side. सबसे पहले create करेंगे एक line dividing our face into two halves. It is up to you कितना लंबा उस line को लेके जाना है. Next, I am taking this purple shade lipstick by Seduction. And lipstick से मैं अपना आधा face cover कर रही हूँ. Just make sure to blend everything very well. It's going to take some time. लिपस्टिक के साथ थोड़ा सा क्या चाहिए कि थोड़ा सा टाइम लगाता है ब्लेंड होने में. टू मेक द कलर इवन डार्कर आई एम यूजिंग NY ब्लिंकिंग आई शेडो इन शेड पर्पल एंड अप्लाइंग इट ऑल ओवर माई फेस वेरी जेनरसली. नेक्स्ट मैं क्रिएट कर रही हूँ कुछ रिंकल्स एंड शेडोज यूजिंग ब्लैक आई शेडो फ्रॉम माई विंकी पैलेट. इट इज़ टोटली अप टू यू आपको रिंकल्स कहाँ पे बनाने हैं, आपको क्रीज शेड्स कहाँ पे देने हैं. नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एक जेल बेस्ड आई लाइनर टू मेक दीज लाइन्स इवन डार्कर.
नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ सम सिल्वर आई शेडो। नेक्स्ट आई हैव दिस कंसीलर बाय फॉक्यूलो और मैं इसे क्रिएट करूंगी एक कट क्रीज। टिल द टाइम मेरा कंसीलर ड्राई होता है मैं क्रिएट कर रही हूँ 20 की आईब्रोज। नेक्स्ट अगेन मैं इसे थोड़ा सा फाइनल टच और दे रही हूँ विद सम सिल्वर आई शेडो। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ एक सिल्वर लिक्विड ग्लिटर। Next thing is to blend everything very well. Now I'm going to set my eyelashes and wig off the camera and I'll come back. Before that I just wanted to show you something that I made for this look. मैंने पेपर मशे की हेल्प से ये हॉर्न बनाया है. I painted it purple and used some glitter on it and also made this flower, but I'm not really fond of this flower, so I'm using the real flowers. Alright, so this is the final look. Let me know आपको ये look कैसी लगी है and I'll see you soon in the next video.